Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Transfer of learning, which is a very important topic of educational psychology, because transfer is something which is needed in our learning process. Even if in every process in your learning or acquiring knowledge there is some kind of transfer in the process, so that's why we have to know in detail that what are the process which we need in the transfer of learning. Okay, let's move forward. About the meaning, we will understand that transfer of learning क्या होता है. It is the ability of the individual to apply the previous experiences on the new related experiences. As from the word transfer already, transfer, we came to know that you have to give some kind of, or you have to do a transferation the knowledge of your previous knowledge. When you are able to transfer into in new or related experiences, then we can tell as that ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. जब आप पुराने जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको जब आप न्यू सिचुएशन में या फिर उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस में अप्लाई कर सकेंगे, या फिर यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट इन दैट particular time, that can be termed as a transfer of learning. When your previous experience or previous knowledge you applied in a related experience or a new situation, that can be called as a transfer of learning. उसके बाद the essence of learning is that a previously learned fact, it could be a fact or information, should be linked with a present experience. जो कि मैंने बोला previous experience जो भी learned fact है उस चीज को आप present situation में जब आप apply कर पाओगे या फिर present experience में, that called as a transfer of learning. Because this is because human being must be dynamic and that the prior experience will make them to develop the new skill. जो भी आप लोगों का पुराना बेसिक जो स्किल है या फिर बेसिक जो नॉलेज है, फ्रॉम बेसिक नॉलेज यू विल बी able to apply that knowledge in a particular field, and that will help, the previous knowledge will help in the learning of new situation or in a learning of new skills. That's why for pre-primary, in the pre-primary class, all the basics knowledge has been provided to students so that they are able to go to the higher classes. So that basic knowledge is something which is their previous knowledge, and with the help of that, जो basic knowledge उनको pre-primary school में मिला था, with the help of that they will able to learn new skills. Means जो भी नया नया सीखेंगे in the classroom, they will learn about that, or they can gain the knowledge. The influence the past experience has on the succeeding experience is called, the past experience का जितना भी knowledge in the present experience में आप apply कर पाओगे, that is called as transfer of learning. If you are able to transfer, that means you are transferring your learning. So this is the meaning of transfer of learning. Let us see some definition given by Cormier and Hagman in 1987. They have defined transfer of learning as the application of skills. क्या है? Transfer of learning is an application of skills and knowledge learned in one context being applied in another context. जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ सीखा है या भी इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को सीखा है, लेकिन यू आर एबल टू ट्रांसफर दैट knowledge in another context, can also be regarded in the another context, also be regarded as a transfer of learning. When you are applying the same skill or acquired skill in the one context, applied in the another context, can also be called as a transfer of learning. For example, in the school, the teacher teaches some subject in order that the experience gained in those subject could be transferred into another. The teacher क्या होता है in the classroom, different टीचिंग या फिर डिफरेंट रिलेटेड सब्जेक्ट सिखाता है, तो वो सब्जेक्ट सिखाने में भी टीचर डिफरेंट एग्जाम्पल का यूज करता है,
On the basis of what? They are transferring their previous knowledge into a new situation. So that can be also regarded as a transfer of learning. It can be applied by the teachers or the students. Student can, अगर student भी अपना previous knowledge को उस जगह में apply करके new knowledge gain करने में help हो रहा है, तो it will be the students previous knowledge or he is able to transfer his learning. तो यही पे वो ही है कि experience gained in those subject could be transferred into another one. So another definition has been given by Chaham, 1987. He affirms that human and animal learning is normally affected by the past experience. जितने भी ह्यूमन एंड एनिमल सीखते हैं दैट ऑल आर अफेक्टेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट में आप लोगों ने किस तरह से सीखा है. इफ ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक स्टूडेंट का या फिर एक चिल्ड्रन का अगर बेसिक एजुकेशन इज बेसिक अगर उसने जान लिया है, अच्छे तरह से समझ लिया है, सो इट विल हेल्प इन हिज फ्यूचर में. उसको हेल्प होगा. जितना अच्छा से वो समझ जाए उतना अच्छे से उस चीज को अप्लाई कर पाएगा. So even in the case of animal also, they are able to apply or they are using or they are taking help of transfer of learning. जैसे कि एक माँ एनिमल में अगर हम लोग जैसे कि एनिमल में हंटिंग सिखाते हैं या फिर किस तरह से शिकार करना है, एक माँ सिखाती है बच्चों को, तो वो भी क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज दे आर हेल्पिंग देयर ओन चिल्ड्रन. So in case of human and animal, all are taking help of the past experience, and that the various subjects are included in the school curriculum because of their utility and wide application of to real life situation. That's why in the school curriculum also different subjects has been included like maths, science, social science, because why, there is an influence of the previous knowledge. Different गुरुकुल system से ही अगर हम लोग स्कूल एजुकेशन के बारे में बोलेंगे, फ्रॉम द टाइम ऑफ गुरुकुल सिस्टम ये सब कुछ जो सब्जेक्ट है तब से ही वहाँ पे था. एंड ड्यू टू इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशन इट हैज बीन कंटिन्यू एंड उसको अभी भी करिकुलम में दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड वाइड एप्लीकेशन टू रियल लाइफ सिचुएशन. ऑल द सब्जेक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड. So, for example, the teacher who has taught his or students some skills in mathematics, for example, mathematics का कुछ skill अगर एक teacher ने सिखाया है, would believe that such skill be transferred to related subject like physics and accounting. Means if a students have acquired a knowledge in the field of mathematics, means mathematics may he have learned different addition, divide or different skills of mathematics. So he can apply that knowledge in the field of physics and accounting also. The knowledge of mathematics is helping to learn the physics and accounting. So this can be termed as transfer of learning. When you are applied to put your previous knowledge in learning something new can be called as transfer of learning. Here is the example. If you have learned mathematics well in or mathematics subjects is your favorite, then automatically that students will apply that skill in the learning of physics also and in accounting also. If the students is not able to transfer that skill, means there is zero or there is no transfer of learning. With that, we will came to learn the types of learning. Let us see what are the types of learning. The first types of learning is positive transfer. As we have learned that what is transfer of learning. So the transfer of learning, as we know, the previous knowledge we are transferring in the new situation can be called as a transfer of learning. So first type is positive transfer, means in a positive way. This is a situation whereby a previously learned fact or information aids in the understanding of new task. जैसे कि आपका जो पुराना knowledge था, that the previous knowledge is helping in learning the present skill or present knowledge. For example, जो मैंने अभी बोला था, एक स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा है तो ऑटोमेटिकली ही विल
or that skill is helping him to learn better way the physics and accounting. और या फिर हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर किसी का बेसिक नॉलेज अच्छा है तो it will automatically help in that subject matter. If we will take the example of school students, basic knowledge is helping in the school subject. Or aside from that, learner who are learner better and effective the new task, means if you are transferring your learning in a better way, means you are that skill is helping you to learn effectively. That is the reason, or that will come in the types or positive transfer. Means the mathematics skills will helping in learning physics and accounting, like the different subject. The social science, who is good in social science, that skill will help in the higher studies like arts subjects, different arts subject. The student who is good in science subject, it will lead him, or he will get a good, or he can use that skill in learning different particular things. So like that, when you are able to transfer the previous learned facts or information in understanding a new tasks, that can be regarded as a positive transfer. यहाँ पे मैं फिर से एक example दूंगी. When you are conducting a class, there are 3 phases. 1, 2, 3. First phase is called as a pre-active phase. This is called as interactive phase. Then this is called as a post active. In the interactive phase, as a teacher हम लोग क्या पूछते हैं? We ask a question to them that to check their basic knowledge. For example, if I am teaching you a learning, so I can ask you the question, what do you mean by learning? If there is a reply from the students in a positive way or any reply, with the help of that reply you will came to know that they have the basic knowledge or not. अगर knowledge है कि नहीं वो पता चलेगा. Means अगर है तो द प्रीवियस जो भी लेसन या फिर आप जो इंटरैक्टिव फेज में आप बोलोगी वो अच्छे से ग्रैब कर पाएगा. तो वो होता है, उसके लिए वो चीज क्या है, दैट विल बी हिज पॉजिटिव ट्रांसफर. आई होप पॉजिटिव ट्रांसफर समझ गए हो. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज नेगेटिव ट्रांसफर. नेगेटिव ट्रांसफर मीन्स नो, जैसे कि एक चीज आपको पता है, means you have learned a skill, but that is not helping in that skill, or that is becoming a problem to learn, means that is creating a problem for you to learn that new skill, can be called as a negative transfer. Means the previous knowledge is hindering your new skill or in the learning of new skill, means it is not helping. That can be called as a negative transfer. This type of learning in which prior experience imparts negativity on the new one, means जो previous knowledge था वो help नहीं कर रहा है, help करने की बजाय वो क्या कर रहा है, it is creating a problem create कर रहा है to learn that new skill. That can be called as a, वो हमको negative transfer, उसका मतलब होता है negative transfer. Or in this case the understanding of past skill inhibits the mastering of new one, means जो previous knowledge आपको था वो क्या कर रहा है, उस चीज को लर्न करने में डिफिकल्टी पैदा कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स रॉन्गली कनेक्ट इंफॉर्मेशन, इट कैन लीड टू नेगेटिव ट्रांसफर. जैसे कि एक टीचर से उसने कुछ सीखा था या फिर राइट और रॉन्ग सीखा था, दैट विल बी डिपेंड अपॉन हिम या द टीचर. तो वो चीज उसने रॉन्ग, अगर हम लोग पकड़ ले कि उस चीज को उसने रॉन्ग वे में सीखा है और डिफरेंट एक स्कूल में ट्रांसफर, डिफरेंट स्कूल में ट्रांसफर हो गया एंड वहाँ पे एक्यूरेटली उसको सिखाया जा रहा है, तो दैट नॉलेज जो उसने अच्छे तरह से समझ लिया था इन अ रॉन्ग वे, उस वो राइट वे को नहीं सीख पाएगा. यहाँ पे और एक एग्जांपल दे सकती हूँ. जैसे कि जो लोग राइट वे में गाड़ी चलाते हैं, फॉर देम लेफ्ट हैंड से गाड़ी चलाना या फिर जो लेफ्ट वे में रहता है उस चीज को गाड़ी में चलाने के लिए डिफिकल्टी पैदा हो सकता है. जैसे कि हाउ ड्राइविंग ऑन राइट साइड व्हीकल हिंडर्स लर्निंग टू अडॉप्ट ऑन लेफ्ट साइड व्हीकल. सो यू हैव लर्न इन द राइट साइड कि राइट साइड में बैठ के किस तरह से चलाते हैं, यू हैव लर्न दैट वे, बट
एज अ सडन वे, जैसे कि फॉरेन में जाने के बाद तुमको लेफ्ट हैंड से चलाना पड़े, या फिर इंडिया में जिस तरह से चलाते हैं वहाँ पे उस तरह का नहीं होता है, मॉडल अलग होता है, स्टेयरिंग भी अलग साइड में होता है. सो दैट लर्निंग विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द लर्निंग, और जो भी उसको एक्वायर करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ निगेटिव लर्निंग या फिर निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. आई होप ये समझ में आया होगा. लेट अस गो टू थर्ड एंड द लास्ट ट्रांसफर टाइप्स ऑफ लर्निंग, जहाँ पे जीरो मीन्स नो लर्निंग या फिर नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. दिस विल बी हियर एंड दिस विल बी हियर, मीन्स देयर इज नो लर्निंग, नो कनेक्शन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, मीन्स देयर इज नो लिंक, ये भी अलग है एंड दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट. In this type of learning reveals no link between the previous learned. There is no link between the previous learned task and the recent one. मतलब दोनों ही चीज में कुछ भी लिंक नहीं है, कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, या फिर वो इस चीज को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है. एंड मतलब ये प्रीवियस नॉलेज इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम और हेल्पिंग, not helping also and not creating problem also. So in that situation, zero transfer of learning will take place. Means the evidence of zero transfer is hardly seen. It reveals no clear positive or negative effect. For example, knowledge of history subject, जिसका अच्छे तरीके से knowledge of history subject है, तो वो चीज, वो सब्जेक्ट का knowledge is not helping or not creating a problem in the learning of driving a car or a scooter. Means history subject ना तो ड्राइविंग सीखने के लिए हेल्प कर रहा है, ना क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. मीन्स देयर इज नो लिंक, हिस्ट्री एंड ड्राइविंग में कोई लिंक नहीं है. उसी तरह से हिस्ट्री अगर खाना या फिर कुछ बनाने को सीख रहे हो, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट का हमारा प्रैक्टिकल फील्ड में किसी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ लिंक नहीं रहता है, या फिर उस वो चीज हिंडर नहीं कर रहा है. सो इन दैट केस इट विल टेक प्लेस एज अ जीरो ट्रांसफर. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को.